वालेकुम। कैसे हैं बहुत बॉस? SIFC का भी जिक्र करें? करना चाहिए। इससे क्या होगा? नहीं, but that is a very big initiative. Introduction. I'll introduce you. Yes? Where are your background? Introduction. तुम कर दो announce. आपका background है? The session title, which we are going to start now, is Growing Return Pakistan's Agriculture Potential. Speakers are Syed Naved, Husain, Faisal, Jahangir, Malik, and Dr. Abed Chaudhury. Moderator is Khurram, Schehzad, who is an economic analyst. Mr. Khurram Schehzad is a honorable moderator. He's an economic analyst and a frequent commentator on economic policy related issues, especially the stock market and Pakistan's capital markets. So thank you, Khurram, for joining us. Syed Naved Hussain, had a long career in textiles, one of the leading exporters of Bangladesh, and is now based in Pakistan as well as Dubai. He has interests in real estate as well as agriculture and is now trying to bring foreign investment into Pakistan's agriculture sector, among other things. Mr. Faisal Jahangir Malik is one of Pakistan's leading rice exporters, and being a session on agriculture in general, but specifically about rice potential, we really pleased to invite Faisal Saab to join us. And Dr. Abed, I think we've already been introduced to. He's given us a great lecture on his field, especially science, as well as the culture behind science. He's been associated with MIT and various international institutions and is now based in Australia and is working on genetics and agriculture. So over to you, Khurram. Thank you very much. Thank you everyone for joining us. Introduction to respectable guests का आपको मिल गया है. But I would like to share first positive news with all of you. I hope आप सबको पता चल गया होगा. Pakistan have won in Australia after 22 years, which is a very good development for all of us. Thank you. It's a good start. Yes. So agriculture का आपको पता है, Pakistan economy has been basically an agrarian economy, or termed as you know, the agrarian economy. Agriculture sector to GDP currently stands at 24%. मैं थोड़े से आपसे numbers share करता हूँ ताकि आप लोग को ये idea हो, context मिले कि पाकिस्तान की economy का size क्या है, and then agriculture जो आज का topic है, how much that contributes to the entire economy. Early 80s या late 80s और early 90s की अगर बात करें तो पाकिस्तान, India and Bangladesh, basically there are three sectors which contribute to an economy. One is agriculture, second is manufacturing, and the third is services. Agriculture sector का जो contribution आज है पाकिस्तान का, इंडिया का एंड बांग्लादेश का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. Pakistan's agriculture contribution to GDP currently stands at 24%, which is very significant, especially given the fact that recently agriculture sector performance has been very good, very significant in Pakistan's context. जो इंडिया का contribution है agriculture का पूरे GDP में, वो तकरीबन कोई 18% है. अगर आप बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी में एग्रीकल्चर का, तो वो सबसे कम है और वो है सिर्फ 12%. दैट्स वेरी एक्चुअली सरप्राइजिंग टू मी आल्सो कि बांग्लादेश ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया ओवर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स से. अगर आप लेट 80s एंड अर्ली 90s का कंट्रीब्यूशन देखें इन तीन सेक्टर्स का, एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो तीनों कंट्रीज का मोरलेस सेम था और एक्चुअली 1/3 था फॉर ईच सेक्टर. यानी कि इंडिया,
बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की जो 3 बड़े सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, वो 1/3 थे, मोर लेस 2-3% ऊपर नीचे होगा। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 20% है जीडीपी का, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 24% है जीडीपी का, और पाकिस्तान का सर्विसेज सेक्टर 56% है, 56% है जीडीपी का। दैट्स हाउ द एंटायर जीडीपी इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है 18%। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में यानी जीडीपी में वो है 28%, और जो सर्विसेज सेक्टर है वो रफली कोई 51% के अराउंड है। दैट मेक इट टू 100%। अगर आप बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जैसे मैंने बताया 12% है टोटल जीडीपी का। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है रफली 34%, हाईएस्ट ऑफ ऑल 3 रिलेटेड कंट्रीज, 34%। और जो सर्विसेज सेक्टर है दैट्स अराउंड 52%। तो इसमें जो मेन टेक अवे है वो क्या है, मैं अपने गेस्ट से भी ये सवाल करूंगा। मेन टेक अवे ये है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की या नहीं कर सके रिलेटिवली, अब कर रहे हैं। उनकी सर्विसेज इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा फोकस था। हमारा मिक्स रहा है, हमने एग्रीकल्चर में कभी किया कभी नहीं किया। हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली 1/3 से नीचे आया है 18% पे, अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 20% पे। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि बांग्लादेश ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया है। जिनका कंट्रीब्यूशन जो था इंडस्ट्री का 33% था, वो 35-36 पे चला गया है। सो दैट्स द की टेक अवे कि वाई बांग्लादेश और हाउ बांग्लादेश हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम एन प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी टू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ये मेन टेक अवे है। सेकेंडली, पाकिस्तान का 37% जो लेबर है पूरी पाकिस्तान के जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें रफली को 37% जो है एग्रीकल्चर से आता है। और एग्रीकल्चर का इनपुट आपको पता है इंडस्ट्री में भी जाता है और रिटेल और सर्विसेज में भी जाता है, फूड सेक्टर में और जो का रिटेल सेक्टर होता है। और हम पाकिस्तान टॉप 10 में हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस में। फॉर एग्जांपल हमारी 4 कैश क्रॉप्स हैं। वन इज कॉटन, देन वी हैव व्हीट, फिर राइस, एंड देन शुगर केन, एंड देन मेज टू एन एक्सटेंट। ये कुछ 75-80% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और हम टॉप 10 में दुनिया में, कहीं किसी 5वें नंबर पे व्हीट में है, कोई 7वें नंबर पे जो है शुगर केन में है, 3-4 नंबर पे कॉटन में है, इसी तरह हम मेज प्रोडक्ट में हैं। और इसके बावजूद देखें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम $10 बिलियन का फूड इंपोर्ट करते हैं डिस्पाइट बीइंग एग्रेरियन इकोनॉमी। सो ये डाइकोटमी में ये अपने मैं रिस्पेक्टेबल गेस्ट से पूछूंगा कि ये डाइकोटमी क्यों है। हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर का पोर्शन बढ़ गया है, मेजर कैश क्रॉप्स हैं, येट वी इंपोर्ट फूड प्रोडक्ट्स। थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। बांग्लादेश रिलेटिवली बहुत कम करता है। बांग्लादेश हमसे कॉटन लेता आया है और वैल्यू ऐड करके उसने चाइना से भी वो आगे चला गया है गारमेंट्स में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। सो व्हाट हैज़ बीन मिसिंग इन आवर पॉलिसी, इन आवर कॉन्टेक्स्ट, विच इज़ हमें उसने एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं बनाया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी नहीं बनाया, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ पूरे एरिया का 25% कल्टिवेबल है सिर्फ लैंड। यानी कि पाकिस्तान का जितना एरिया है उसका सिर्फ 25% हम जो है एग्रीकल्चर हमारा जो है उस पर प्रोड्यूस होता है। बाकी हमारा या तो बैरन है, और मैंने ये भी देखा है कि 25% कल्टिवेबल लैंड जो है वो उस पर काम ही नहीं होता। तो मैं स्टार्ट करूंगा डॉक्टर साहब से। सर, यू हैव बीन प्रेजेंटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सपेक्टिव्स। अभी आपने पूरे 1 घंटे की जो है प्रेजेंटेशन दी है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैज़ बीन मिसिंग इन पाकिस्तान केस that we have not been able to capitalize on our potential, be it our farmers, be it our banks, our capital economy, convert क्यों नहीं कर सके हम इसको आज तक वैल्यू में, और बांग्लादेश ने कर लिया, इंडिया टू एन एक्सटेंट कर चुका। So sir, your thought on that please. Thank you. I think after being in Pakistan and traveling in Punjab and Sindh and
remembering the whole history and comparing and contrasting with Bangladesh, there are several points I want to raise. One is it seems like Pakistan has huge potential land, and I think in the top people are extremely educated and everything is there. But Pakistan doesn't seem to have a unity of purpose. It is not organized in a focused way as a nation to achieve certain goals. And politicians, there are big landlords who are politicians, but they're not custodian of the land. They're not interested in crop genetics. They're interested in fintech, financial, fiscal kind of thing. I think it's very important to own the plant and the land, and like this is what autobiographically I have done. Instead of starting some company here, there, I put all my savings, about $3 to $4 million, into just develop another crop. And people thought it was crazy. People told me, you've gone away, why do you even come back to the village? Not to mention stay here in the rain and the etc. So my judgment is not the wise one, maybe or rational, but very emotional and personal. And I would like every country to be like this, so obviously. So Pakistan can be like that, but I don't meet except for Faisal. Faisal is an exception, but other Pakistanis I don't see to have this focus, unity of purpose to do something good for the country. Right. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Very important point. Unity of purpose is something that's been missing from our equation. Faisal, coming to you. अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि you have been in this business of rice export कर रहे हैं. Last year, Pakistan, by the way, made recent history when Pakistan exported $4 billion, roughly $4 billion worth of rice to the world. उसमें एक catch ये भी था कि I think India is our one of the biggest competitors in this area. बासमती भी हम बड़ा लड़ते हैं कि जी बासमती हमारा है या उनका है, या वो जो ब्रांड है वो हमने शुरू किया है, उन्होंने शुरू किया. सो इंडिया ने थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स रोकी क्योंकि उनके इलेक्शंस थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी मैटर्स, और उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट कम की ताकि प्राइस लोकली जो है वो नीचे आ जाए राइस की. उसकी वजह से हमने एक साल में कैपिटलाइज किया. क्या हम ऐसे ही दुनिया अगर कुछ करेगी तो उस पर कैपिटलाइज करेंगे, या खुद भी कुछ करेंगे जिससे हमारी यील्ड्स बेहतर हों, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो? तो क्या मिसिंग है आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके पर्सपेक्टिव में, जो हमें करना चाहिए? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा यूनिटी ऑफ पर्पस एक मिसिंग है ब्रॉडर एस्पेक्ट में. आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ मिसिंग है और क्या करना चाहिए? First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Apart from White Bull, I am also the chairman for Rice Export Association of Pakistan. So, जो आप बात कह रहे हैं कि what's missing, Pakistan's rice sector, I mean, is one of the most positive sectors. And अगर आप किसी भी rice exporter से बात करेंगे, I think rice exporters are the only industrialists of Pakistan who will speak to you with a positive intent. Historically, rice जो था वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट में आया था इन 1989 में. उससे पहले RECP पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट किया करता था. So once the rice sector came into export, या कोई भी पाकिस्तान का ऐसा सेक्टर जो एक्सपोर्ट में आया, वो बैसाखियों के सहारे अपनी इंडस्ट्री को चलाते रहे through subsidies and through different channels and through, I would say, tax management, या सारा कुछ होता रहा. But rice sector is the only sector of Pakistan कि जिसने without any subsidy, it has always given valuable foreign exchange to this country. So what you are saying कि बासमती की अगर मैं पहले बात करूँ तो Basmati was never a GI tag product. 2020 में 16 सितंबर 2020 को जब यूरोपियन यूनियन में a case was filed by APIDA, which is the Agriculture Produce Department of India. उन्होंने केस फाइल किया था in the European Union with the DG Agriculture that Basmati is solely owned by India. In true definition, Basmati की definition क्या है कि it is a rice which is grown in the foothills of Himalaya, in between the plains of Chenab and Ravi. तो उसके दरमियान का जितना भी एरिया है वहाँ पे उगाया गया चावल विद a particular seed variety is known as Basmati rice. और फॉर्चुनेटली ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि पहले तो हमारे पास GI लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता था पाकिस्तान में. So in March 2020 we did have the GI law कि जिसकी बेस पे हम लोगों ने जाके अपनी ऑपोजिशन फाइल की और इसको हमने प्रोटेक्ट किया. एंड वी आर वेरी क्लोज. अभी तक डिसीजन तो नहीं हो सका, बट वी आर वेरी क्लोज एंड देयर इज अ चांस कि ये एक जॉइंट हेरिटेज होगा फॉर बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इट इज नोन टू द वर्ल्ड कि ये दोनों मुल्कों की. अगर मैं पर्टिकुलरली राइस सेक्टर की बात करूं
rice sector के अंदर the biggest gap that I see is the conventional farming practices to and the move towards the mechanized farming जो जो वो एक बहुत बड़ा gap है पाकिस्तान का इस साल भी जो हमारा area under cultivation है for rice that is 11.2 million acres which is again the highest in the history of Pakistan and we are expecting कि हमारी इस साल की जो production है that will be 11.2 million tons I mean, this is the lower bound और ये हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो इंशाल्लाह. Last year also we had the highest export. जो आपने बात की कि there was an opportunity पाकिस्तान को गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया में इलेक्शंस आ गए और वो एक एक्सपोर्ट का हमारे पास पाकिस्तान के पास इतना एक्सपोर्टेबल सरप्लस था तो ही जाके हमने दुनिया की डिमांड को सर्विस किया और हमने जो एक इंडिया की तरफ से एक बैन लगाया ड्यूटीज इन प्लेस आई उसको पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे कैपिटलाइज किया बट दैट वाज समथिंग व्हिच वी कुड हैव स्पोकन आई थिंक अगर आप 5 साल पहले बात कर रहे होते देयर वाज नो वे वी कुड हैव कम्पीटेड इंडिया बट नाउ वी आर वेरी क्लोज अब इंशाल्लाह इन अ फ्यू इयर्स आई रियली एक्सपेक्ट दैट वी विल बी ग्रोइंग दिस ट्रेंड और इसको हम बढ़ाते हुए जाएंगे आज भी अब इंडिया में बैन खुल चुका है देयर इज नो मोर बैन इन इंडिया उसके बावजूद एक पाकिस्तान में आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्वार्टर में भी पिछले साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट रही बट टेंडर में एक मिसाल दूंगा यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज़ आल्सो बुलॉग इंडोनेशिया का जो टेंडर था 5 लाख टन का इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली बाय अ फ्यू कंट्रीज जिसमें थाईलैंड पाकिस्तान और वियतनाम था और बाद में फिर उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा किया गया जस्ट टू इंक्लूड इंडिया इन दिस we thought that we will not be able to get this tender because India is there और हमारी prices कम आ जाएंगी this only happened 2 weeks ago और luckily alhamdulillah Pakistan was the lowest bidder हमारी price was at $473 and India was at 513 Right. so this trend will continue and Right. inshallah we are focusing towards a growth trajectory. Okay, thank you for this perspective. ये बड़ा अच्छा लगा सुन के कि despite the fact India is back in the game, still we are competing very well. ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है दिस मीन्स कि हमारी राइस की एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू करेगी और जो हमने लास्ट ईयर $4 बिलियन अचीव किया एटलीस्ट के क्लोज हम आ जाएंगे और या इसको क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि ये कैश क्रॉप है नवी साहब आपसे सर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यू नो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज की टू हैविंग हायर यील्ड्स एंड बेटर आउटपुट्स एंड ऑफ कोर्स जो मार्केट में प्रोड्यूस आता है उसकी वजह से देखिए दो लोग उससे बेनिफिट होते हैं इफ यू हैव हायर प्रोड्यूस योर ओन पॉपुलेशन विल गेट बेनिफिट प्लस you'll have एक्सपोर्ट आल्सो सो दोनों पॉपुलेशंस को या दोनों ऑडियंसेस को आप एड्रेस करते हैं विद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हायर आउटपुट्स सो सर आपने क्या देखा है व्हाट्स मिसिंग इन पाकिस्तान in terms of there has never been extraordinary production in terms of ये productivity नहीं रही है हमारे farmers को वैसा जो है हमने educate नहीं किया है उनको capital access नहीं दी है हमारी farm to market पूरी जो supply chain है वो हमेशा से affected रही है उसमें आपको पता है middleman ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जो है उस पूरी चेन को आगे ना आने में वो हम वर्ड यूज़ करते हैं जो मिडिल मैन होते हैं हमारे यहाँ मैं वो यूज़ नहीं करना चाहता यहाँ पे बट यू ऑल अंडरस्टैंड राइट कि वो किस तरह से लोन शार्क्स होते हैं वो कितने बड़े लोन शार्क्स होते हैं कि फार्मर्स से वो प्रोडक्शन लेते हैं अपने गोडाउन्स में रखते हैं और उनको बहुत महंगे लोन देते हैं तो वो बेचारे अपनी इनकम ही नहीं बना पाते और वो जब मार्केट में लेकर आते हैं तो मैनिपुलेशन भी बहुत करते हैं बीट शुगर बीट वीट या कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें प्रोड्यूस ले लें सो सर आप किस तरह से रीड करते हैं पाकिस्तानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कि पोटेंशियल जैसे उन्होंने कहा कि एक जो है पर्पस नहीं है इन्होंने कहा कि हमारे पास आज हम compete कर रहे हैं बट लॉन्गर टर्म में हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा पोटेंशियल भी आए प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो हमारे प्रोड्यूस आए हम एक्सपोर्ट मार्केट को भी एड्रेस करें लोकल को भी एड्रेस करें वेरी ब्रॉड क्वेश्चन बट व्हाट्स ऑन योर माइंड So it seems to be working, yes. So anyway, it's a pleasure to be here, and Karachi is where I was born. I have a special, I really love it. I don't feel like leaving whenever I visit. So firstly, I think, okay, what we really need to do is to, personally, I think it's a mindset problem. Okay.
okay, we play to lose. So, and part of that, I think, starts from the British colonial time. If you become a colony, then you're no longer the master of your destiny. So you have to ask a white man, okay, what should I do? So if I go to Texas, they want to build a road. They'll say, how wide a road can be built? The Chinese do the same. You talk to someone here, he says, how narrow can we make it? So one reason, I was very impressed by Faisal because of his energy, his passion. He used to come to me in Dubai saying, let's, change the rice game in Pakistan. Right. So the other thing which was happening was brain drain. Because whenever I meet a Pakistani outside, he tells me, and some of the very rich ones, that everything is finished, we want to move out. And then I tell them, can I come and check your bank account? So, they're living a leisurely life, but they want to leave. So basically, so one of my purposes of being here is to reverse that and make a brain gain. To make a brain gain, I kidnapped Dr. Abed, who was a friend of mine. He didn't know what was happening, and I brought him. Then we went to Tandu Jam, we went to Kala Shah Kaku, his first trip in Pakistan. He has a lot of affection for the country. Because he says that if it was not for Muhammad Ali Jinnah, then Bangladesh would not have been there, although they created it. Thank you. Thank you. Very Right? Now, so for both these gentlemen, I have huge affection. Now, the way I look at it, we should not look at it at a micro level. I'm also advising the Uzbekistan president. So we looked at it, we said, they used to grow cotton. So your cotton is $2 a kg. So why the hell should you export cotton? You make it into yarn, it becomes $3.50. You make it into fabric, you add another dollar or so. Why don't you export a garment for $14? So then we took 200,000 acres of land, we put ginning, we put the whole thing, and we are exporting $14 garments, and that has opened the way. So I told Faisal, why should we, number one, we have $4 to $5 billion of export. So by the time we let Dr. Abed loose, instead of one yield, you'll have 5 yields. So your thing jumps to 25 billion just in rice. So that made sense. It made it worthwhile for me to come. Then, when we do that, I see you're wearing a polo shirt. Why do you wear a polo shirt? Because you like it. Yeah. You look sexy. Right? So, is it original or a pirated? Pirated. Eh? Pirated. It's pirated. Pirated. Haath mein lo. So, when you wear the polo shirt, you're looking for differentiation, and then you want the horse. So basically, if we take rice, and rice is also slightly diabetic, so we take out the diabetic element, which he knows how to do. Take out the sugar and fortify it. So you decommoditize it. Okay? So your polo is actually a decommoditized shirt. That's why you pay so much. Now, so when you decommoditize it, then you are coming into a new competition. So today we had a fantastic meeting with Tariq Saab, who set up a company where he's packing Nihari and all this in UK, Aladdin. And, he's focused on that. He's developed a technology. So why can't we take this rice and pack it and make pulao and biryani? So what I'm saying is you start with 5 billion, you go to 100 billion. Yes. Why our target should not be 100 billion? Absolutely. Absolutely. Now to reach there, when we went around, so basically what I would, if I had the power, which I don't,
I would have dismantled the government because this is a legacy of the British. True. So when I built up my company, I gave out a lot of books. So there's a book, long time back it came out, Re-Engineering the Corporation. Okay? Every big American multinational distributed it. So what that says is that you can have computer technology. So the information I have, you have, he has. And then we can empower everyone to move fast. So we went to all the government offices, we met everyone starting from the president down. Some of them, I must say, were, on the they wanted to do good. Right. But Mifta said that the system needs to be changed. I 100% agree with him. It's not the people. So even in Kalasha, Kaku, and in this place, Dr. Abed found some geniuses. But they were being wasted, absolutely. Right. 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 So that's something which, I have no power with. Right. Right. But, for people who have power, for the population, we need to change the system of government, change the bureaucracy. We need to take a big sword and put it right through the heart of bureaucracy, Right. otherwise the country will not move. So, very All of important us will inputs. do it together. These are very important inputs. I've noted two key inputs. One is we should aim high, right? And we can do that. Secondly, how value addition can take us, to the next level. So that's something. This one, she had a very good question. Who will Okay. do it? Yeah. What I meant is that right now what we have done is that we've organized the scope. So rather than sobbing and crying everything is bad, Faisal has offered he's got an amazing, So closer, please. he's got an amazing, from land to packaging to farming to rice. Entire value chain. Yeah. Yeah. You can bring any top rice company from abroad and they'll be proud. All about nationalism and solutions way forward. Yeah. I have been managing time for water for 10 years. There is so much of politicizing of Can I So, please. So let's keep this question answer in the end, please. Please. you say that we can do it. Yeah. Everything is there. There's so much of politicizing everywhere. All our efforts of think tanks, of people, of experts goes waste here because it doesn't move forward. See, what we are doing is what everyone does. Everyone knows what you are saying. These are problems. Who will fix it? Will someone come from the moon or America? We'll come back Yeah, to yeah. this So question. This is a my very important point here question, is actually. that let's take what we can do. Yeah. So I twisted his arm. I said, you've set up such a, I want a piece of your land. He said, So it's a he very said, good take question, it. sir. Then I got him. So, without worrying about government, we are going to do a pilot. Okay. So we will make it 5 times. Now, when we make it 5 times, we've had a meeting this morning. So I've got a company in UK who will package it. When we package it, then we will go sell it. So I really don't give a damn about this government, that government. I follow the principle of Nike. Just do it. Okay. So it's a very good point. It's a very good point. Actually, you see, you have to do it within your capacity, but you can do. And, but how I see it basically is from a policy standpoint, government has to give you a policy. So it can be scaled, it can be, implemented wait all for- across the board. But I agree with you that a bite-size implementation or a plan should be done. No, it's not in order going to be bite size. We are going to do it and scale it. Because let me put it this way, that Bangladesh had the same problems. Okay? I went from scratch and I built an empire which employs 70,000 people. And I moved all their head offices to Dhaka instead of Delhi. Okay. So as I said, look, see how you can make the road, how broad.
Because if you keep talking about problems, you're not going to You're solve you're any problems. So, that we all agree with. So, Dr. Saab, as Naved Saab pointed out, you have been there in Sen and in the interior also. So, can you share with us Yeah, your yeah. observations, the problems and the solutions thereof, Yeah, please? yeah, yeah. So I think Pakistan has unique advantages because the rural heartland has not been left. So I went to Hafizabad and I was very impressed. I spent a lot of time in America where the people say that the soul of America is in Iowa, not in Washington. So I would say Hafizabad is a bit like Iowa of Pakistan. And that should be nurtured. Hafizabad should not be turned into a factory because the typical doctrine of development says that convert all your rural heartland into factories, and that is development. But the modern concept is not that. You should build Hafizabad in a way that it continues to do rice and not turn the rice land into factories, even if that factory would increase your GDP. Because GDP is not just measuring dollars. GDP is about sustainability, the status of your soil, etc. So I would say Pakistan has great potential. Pakistan would get its act together and all the top people sit down with the army and all those things. And then make a roadmap and convert this country into a pathway of sustainable development where climate mitigation, looking after the soil and water, the great rivers which makes Punjab Panch Ab, right? We say Ab Hawa in Bangla. Yeah. Ab is water. Yeah. So the body of five water is a heritage, an asset of this country. And the conventional economics book says the tree is not an asset till you make it a furniture. Excellent. And that is wrong, wrong, wrong. That is not the way to go. So we should reconvene our thinking. We should kind of change our mind and brain a bit and refocus. And Pakistan can be a very great country, keeping its agricultural soul and the heartland soul intact, Yeah. and yet developed. Thank you for this input. And I've observed that, and this is basically public information. Everyone talks about it. Everyone knows about it. That if you take an example of India and Pakistan, उस तरफ border के और इस तरफ border के, right? Yield is starkly different. Like अगर हम one time करते हैं, they do it 3 times, 4 times of cotton and the wheat and all the other produces. So what's the key reason? Why are we not being able to develop or extract that kind of output from our soil that India has been doing, that Bangladesh has been doing? What has been the key reason for that? Okay, so Pakistan spends 0.16% of its GDP into research. India put 0.6%, 5 times more. So everything being equal, they are going to make more innovation than Pakistan. Right. Now, Pakistan's percentage of R&D as a percentage of GDP in year 2005 was similar to India, 6%. Yeah. And then there's a continuous slide, and I just couldn't understand why. Because it shot up from 2001 to 2005 to about 6.6%. Yes. And then there's a continuous slide. If you look into I actually have this slide in here. I didn't want to show it because it's going to upset people. But it seems like Pakistan is in a death wish of continuously every year reducing its allocation to R&D. Right. And this is something you should ask Islamabad as to why Very they're important doing point, because the area we should invest into, we don't invest into those areas, like be it education, be it healthcare, R&D and all that, which actually improve your productivity over the longer period and give you results in terms of agriculture productivity, manufacturing, industrialization, and then the retail sector that converts into lower imports and higher exports, and the entire your macroeconomy gets better. So my question to you is, Faisal, कि हम क्या ऐसा करें जिसमें ना सिर्फ राइस में वैल्यू एडिशन हो, जैसे नवीद साहब ने कहा कि वैल्यू एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी प्रोड्यूस करें वैल्यू एडिशन होनी चाहिए उसमें, और हम क्या ऐसा करें कि ना सिर्फ राइस की इंडस्ट्री को हम कंटिन्यूस बेसिस पे वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाएं. ब्रांडिंग नहीं हो सकती इसमें? क्यों नहीं हो सकती ब्रांडिंग? पाकिस्तान का अगर बासमती है और इंडिया का बासमती है या किसी और कंट्री का बासमती है, तो हमारा डिफरेंट क्यों नहीं हो सकता? या हम सॉल्ट की बात करते हैं, लेट्स से हमारा जो है हिमालयन सॉल्ट है या दूसरा है, उसे इंडिया जो है वैल्यूडेशन करके उसी को बेचता है बाहर, ज़्यादा पैसे कमाता है, और हम उसको रॉ में बेच देते हैं. तो क्यों नहीं कर सकते राइस में या दूसरी इंडस्ट्री में? क्यों नहीं करते हम? ब्रांडिंग क्यों नहीं करते? पोजीशनिंग क्यों नहीं करते बाहर जाके, जिससे हमारी एग्रीकल्चर मैं बताऊँ पूरी दुनिया में
जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इकोनॉमीज हैं वो वही हैं, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या ईस्टर्न यूरोप है. व्हाई कांट इट बी पाकिस्तान? व्हाई कांट इट बी अस? प्रोडक्ट्स में हम क्यों नहीं करते और कैसे कर किया जाएगा? प्लीज अगर इस पे आप 2 मिनट का आंसर दें फिर मैं नबी साहब. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू, आई टेक योर क्वेश्चन इन टू पार्ट्स के. एक तो हम अपनी यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं और वैल्यू एडिशन, दो चीज़ें. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फार्म लेवल पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है फॉर मूविंग फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग टू मैकेनाइज्ड फार्मिंग. ना व्हाई आई से दिस, जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करते हैं तो ये वही जो हमारे पिछली 5 नस्लों से फार्मिंग प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, आज भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वही इम्प्लीमेंट हो रही हैं. सो व्हाट हैपेंस इज 1 एकड़ ऑफ लैंड, उसमें जब आप राइस प्लांटेशन पे जाते हैं तो हम लोग मैनुअल, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मैनुअल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस. सो व्हाट वी अचीव इज, वी अचीव 45,000 प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़. अच्छा, इसको हम मैकेनाइज पे ले जाते हैं, वी यूज पर्पस बिल्ट राइस ट्रांसप्लांटर्स, सो दैट 45,000 प्लांट पॉपुलेशन गोज टू 95,000 प्लांट्स पर एकड़. सो सी, एंड द यील्ड इक्वली, अगर आप उसमें पहले 45 मन यील्ड ले रहे थे तो ये अब आपकी 70-72 मन पे चली जाएगी. इट वोंट डबल बट इट विल गो टू 70-72 मन. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, गोइंग फ्रॉम कन्वेंशनल टू मैकेनाइज्ड फार्मिंग. फिर जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, सी, बासमती इज नॉट द ओनली राइस प्रोडक्ट दैट वी हैव. बासमती इज अ लग्जरी प्रोडक्ट. चावल आपको 90 रुपए किलो भी मिल जाता है और बासमती आप 550 किलो रुपया भी खरीदते हैं. द लार्जर चंक्स ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स comes from non basmati and it is a very huge number है. Okay. बासमती को कंपेयर करें तो बहुत छोटा नंबर है. Now if we speak about the value addition in the larger segment or basmati rice combined, दुनिया में the world is moving towards a different direction. Unfortunately in Pakistan हम लोग, we don't have the resources, be it financial resources or be it the technical expertise, उसकी हमारे पास कमी है, वो चाहे research based हो या, I'll give you an example कि अब अमेरिका में there is a developing technology where they're eradicating diesel being produced by crude oil या Brent के जरिए. They're using biodiesel which is being produced from rice. अगर उसकी हम बात करें तो that the minimum investment is around $500 million. So I don't think Pakistan has the backbone or a private company in Pakistan would have the backbone to invest in this. आप करें ना, जी आप करें. इसमें see, जी Ma'am, please. नहीं. so I'll come to that. Please, go on. So the last point of this is, see, when once we say value addition, I'll speak about China. I'll give you the last example. China में rice or rice made products are more than 3,000. और Pakistan में unfortunately we only have 2 companies who are actually making chemicals out of rice, which is Abed rice products and Shafiq Glucochem. Right. तीसरी कंपनी नहीं है कि जो यहाँ पे chemicals बना रही हो. There are new companies coming up, but Right. still we are Right. very much behind. Thank you, sir. My quick question to you, and you please have 1 minute to answer. Sir, talk of precision farming, hydroponics, आपके जो democratize करते हैं agriculture sector को, वो ideas plus modification of seeds, ये सारी जो advancements हैं, ये पाकिस्तान में कैसे आ सकती हैं? कौन करेगा ये आप कह रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर करेगा, ये गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए? Let me put it this Sure, way, that I'm doing it in 2 areas. ठीक है? Number 1, we spoke about rice. We'll go from 1 to 5 crops. We'll go from 1 to 5 crops, and the 2 gentlemen here working together, we will do it. You asked him about branding. We are working on branding. The third thing is that, we are wasting a hell of a lot of money importing energy and creating pollution, and then people can't breathe in Lahore. True. So there is a technology. I sit in the board of a Dutch company where we took this scientist who used to work for NASA. He looks after energy division. So we can take that biomass, which has a calorific value of 5, and increase it to 25. And then you can use it, so you stop importing fuel oil. So it cuts your import bill. Yes, absolutely. It gets rid of your pollution in the Punjab. So there are solutions, and those solutions are based on technology. So we need to connect. So China, for instance, America's vision of China was to make it a labor camp. They will do all the intellectual work, they will do the manufacturing.
they did not realize that they'll pick up the technology. And when he said that our focus on technology and education is minuscule, so in the long run, that's what we need to do. In the short run, Right. we will inject brains and we will work. And, you know, for that, of course, there are many excellent people in the government, but it's the system. So we will work with them and get their support, and inshallah, Yes, we see a thank good you. future for Thank you. Pakistan. Excellent, excellent. Thank you, thank you. We come to the question answer session. So, anyone has any questions, please? आप थोड़ा सा quick कीजिएगा और please direct question कीजिएगा. Thank you. मैं सबसे पहले तो कमेंट करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा विजन है, but what we should understand is China produces 150 million tons of rice. India produce 141 million tons of rice. Bangladesh 3 crops जो है ना, ओस, बोरो और अमन, 3 क्रॉप राइस के लेता है. अच्छा, अब हर इन्वायरमेंट के लिए अपनी सूटेबिलिटी होती है, क्लाइमेट एंड एग्रो इकोलॉजिकल सूटेबिलिटी. नाउ दिस ईयर व्हाट हैपेंड कि हाइब्रिड सीड वालों ने कुछ एरियाज में पंजाब में अर्ली सोइंग करवा दी कि जी यू विल गेट 2 क्रॉप्स. मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी. जी नहीं, हम तो हाँ, आपको 2 क्रॉप्स मिलेंगे. नतीजा क्या हुआ कि 2 क्रॉप्स क्या, 1 क्रॉप में भी 30% प्रोड्यूस नहीं हुआ. तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट. व्हाट वी नीड इज, ज़रूरी नहीं कि बांग्लादेश या चाइना में जो वैरायटी कामयाब हो वो यहाँ पर भी वैरायटी कामयाब हो, और या अगर 5 क्रॉप उधर ले सकते हैं तो आप यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वो कामयाब ना हो. तो केयरफुली इसको लेके चलें आगे. और अनदर फैक्टर इज दिस कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. हम हाफ हार्टेड एग्रीकल्चर करते हैं. हम 2 बोरी के बजाय 1 बोरी. थैंक यू जी. अच्छा, ये जो है ना, खुर्रम साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 25% लैंड पे इरिगेशन होता है, बाकी जगह या तो बैरन है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. तो स्प्रिंकल फार्मिंग और जो ड्रिप इरिगेशन है, ये गल्फ में बहुत सक्सेसफुली पाकिस्तानियों ने की है. सऊदिया में, कसीम के इलाके में स्प्रिंकल फार्मिंग सारी या तो पाकिस्तानियों ने की है या बंगालियों ने की, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं हुआ. डिसैलिनेशन गल्फ में बड़ी कामयाबी से पाकिस्तानियों ने ही की है, लेकिन हमारे मुल्क में ये सारी न्यू टेक्नोलॉजी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी? आबिद साहब बताएंगे. I think drip irrigation would be very difficult to execute in this such large area, because I did a lot of drip irrigation projects in Africa, and limited way for very high value crop you can do it, but not for rice. It will be very expensive to do drip irrigation. Sprinkle farming you can. Rice actually does not need a lot of water. Rice water is used to suppress the weed. So we grew rice under sprinkler, like a lawn sprinkler, rice works. So this is something, a technical issue that can be discussed. Yeah. Yeah. I would like to ask, आपसे मुझे एक सवाल करना है. I'd like to just ask you that China ने, I've read somewhere that China is growing rice in moist soil. So they've cut down the use of water, and it has been a successful experiment in several countries. Perhaps Bangladesh is also doing that. Now, my understanding is that you may have done away with flood irrigation, but what about the subsoil water? What about the depleting aquifers? Rice requires huge amounts of water, and that amount of water is being sucked out of the Punjab aquifers and the northern Sindh aquifers. Now,
compared to that, uh, I do understand that you're coming in with innovative ideas. I do understand that you have a deep understanding of the relationship between humanity and the ecosystem, and how we are at this point in time standing where the ecosystem is collapsing because of man's ignorance and man's not understanding for all those things. And just for rice, I witness to a policy, an agricultural policy was in my hand that had been drafted a few years ago. And rice was right on top as a major revenue source for Pakistan. And I put the question, this question that I'm putting to you, that the hybridization of our rice should be happening. What we don't have is enough R&D on rice. What we don't have is seed banks where we can nurture new specimens and new qualities of rice. People like you, young progressive farmers like you look at the future. You may be earning good revenues today, and it may be a success story, but you have to look at a future where scarcity of water, a dying soil, and greater needs of the Pakistani, of the humans living in this soil, will be more relevant than that of revenues by export. See, I would consider your question as being how rice जो है वो पानी की ज़रूरत उसमें ज़्यादा है. मैं आपको ये बता दूं कि चावल खुद फसल इतनी पानी की मांग नहीं रखता. दो वजूहात हैं. सबसे पहले तो जो हमारा 40% पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है चावल की फसल के अंदर, वो सिर्फ एक वजह है उसकी कि आज भी हम पहले अपनी ज़मीन को फ्लड करते हैं. देयर इज़ नो लेजर लेवलिंग. ये एक कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है. जब हम मैकेनाइज्ड की बात करते हैं, द मैकेनाइज्ड फार्मिंग रिक्वायर्स यू टू लेजर लेवल योर फील्ड बिफोर यू कैन मूव टुवर्ड्स ट्रांसप्लांटेशन. So only by this one step you are saving 40% of water. Another 40% can be saved by the farmers, क्योंकि farmers weed की फसल में बेहतरी लाने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. So right, yes, it's a misconception. But her point is very important कि आज का revenue important है या future की development और widespread impact. So the future development is all linked with revenue. So whatever we will be looking to develop would be based on revenue. अगर revenue पर नहीं बढ़ेगा तो हमें उस development का क्या फायदा है? अच्छा सॉरी बस मैं एक ये कह रहा था कि अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है और ग्रीन मूवमेंट SIFC और उसके थ्रू काफ़ी काम हो रहा है, हमने भी लिए हैं उसमें. एंड आई थिंक दैट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ हैपनिंग. ग्रीन इनिशिएटिव सिंध में ब्रिगेडियर नैयर डील कर रहे हैं उसको. एंड आई थिंक we've also taken a number of land for that, and that's sort of corporate farming and which has lot of initiatives. उसमें आपका क्या take है? See, देखें, I mean the initiatives by SIFC की जो body में green initiative है, LIMS I believe जो उसकी वो ज़मीन है, that's a great initiative. I completely उसको, I mean area under cultivation बढ़ना चाहिए. We will be very happy as rice exporters के पाकिस्तान का area under cultivation बढ़े. हमारा तो मानना है grow more, export more. Unfortunately problem ये है कि SIFC के अंदर से उसके अंदर कोई particularly rice को लेकर हमारा कोई ऐसा कोई special initiative नहीं है. The initiative by SIFC is agriculture in general. They have already evaluated कि कौन सी agriculture की चीज़ है कि जो हमें ज़्यादा in a shorter period of time, in a short term, they don't have a medium term approach as yet. Short term approach में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा benefit देती है? Yes. Rice is not one of them. So जब होगा फिर इंशाल्लाह. okay, with this we come to an end. I hope this session has been very productive and informative for all of you. Thank you very much, Dr. Abed, Dr. Faisal, and Mr. Naved. Thank you very much. Thank you. Thank you. The session which we are going to start now is Educating Pakistan, Success Stories and Best Practices. Nasreen Iqbal, Anjum Halai, Muhammad Ali, Sheikh, Muhammad Hassan Khan, and moderator is Shoaib Arshad. Tell everyone. भाई आपने तो शुरू ही करवा दिया. क्या करवा दिया? मेरे को बेहतरीन आपने तो शुरू ही करवा दिया यहाँ पे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने नहीं बाकी. I did the same.
काफी बदतमीजी मैंने की है गवर्नमेंट के साथ। आई जस्ट वांट टू टेक